Hello everybody, this is Dr. Nur Shah. Today video is about Romberg method for numerical integration. I'll be talking about calculator tricks and MATLAB implementation. Before I move towards the calculator tricks, I'm going to explain how does a Romberg integration works. So let's suppose the basic Romberg method is defined for an integral from a to b f of x dx, where we do first few steps by using composite trapezoidal rule with n is equal to 1, 2, 4, 8 and 16 and so on. You can go for 32 and representing denoting these approximations. जब n को हम 1 लेते हैं तो इसको हम I11 से रिप्रेजेंट करते हैं. जब n को हम 2 ले रहे हैं तो we represent that by I12, then I13, then I14, then I15. Okay, and these values are basically given can be obtained in the following way. So we first introduce h dash, that is b minus a, keeping in mind यहाँ पे हम b minus a divided by n नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम n को चेंज करते जा रहे हैं. तो ये जो n की जो h की जो वैल्यू होगी वो फिर आगे इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगी. Okay, so I11 that can be easily found is 1 by 2 f naught plus f n, because यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही इंटरवल है और एक इंटरवल में मतलब यही कि आपने इनिशियल वैल्यू को यूज़ करना है और फाइनल वैल्यू को यूज़ करना है. तो दैट्स ए सिंपल सम ऑफ टू वैल्यूज़ इनटू 1 by 2. अब इसको हमने ट्रेपेजॉइडल में कन्वर्ट करना है. तो यू शुड नो दैट ट्रेपेजॉइडल सेज दैट h by 2 or h dash by 2 in this case. यहाँ पर h dash b minus a, so it will be h dash multiply by I11 because 2 यहाँ पे already मौजूद है. Okay, and then we do what? We find I12 जो कि इसमें हम इन नंबर ऑफ इंटरवल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको 2 कर रहे हैं और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, उसमें ये समेशन भी आएगा और एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है जो कि उनके मिडल में होता है. और वो टर्म कहाँ पे लाई करेगा, दैट विल लाई एट a plus h dash divided by 2 and the corresponding trapezoidal value will be h dash by 2 times I12, because अब यहाँ पर क्या होगा, दो इंटरवल हम ले रहे हैं तो यू शुड रिमेंबर कि h जो हम लेते हैं जो मल्टीप्लाई होता है उस सम के साथ, दैट इज़ b minus a divided by 2. तो इसलिए हम यहाँ पर h dash by 2 कर देते हैं. द सेम थिंग फॉर I13. अब इसमें I12 यानी ये वैल्यूज़ ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होंगे, ये इधर आ जाएंगे इसमें, और बाकी दो वैल्यूज़ मज़ीद इसमें शामिल हो गए हैं. ठीक है, और अगेन देन T13 इज़ h dash by 4. अब 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इंटरवल्स हैं वो 4 हो गए एंड देन वी हैव टू अप्लाई दिस ट्रेपेजॉइडल रूल टू गेट h dash by 4 into I13. सेम थिंग कैन बी डन फॉर I14 एज वेल, जिसमें I13 ऑलरेडी मौजूद होगा और ये इसमें मज़ीद जो 4 टर्म्स हैं वो आ जाएंगे एंड दैट विल बेसिकली मेक द नंबर ऑफ़ इंटरवल्स 8. और यहाँ पे फिर जब हम T14 को फाइंड करेंगे so that will be simply h dash by 8 because we are considering 8 intervals, सब intervals. नेक्स्ट फिर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो I15 वो फाइंड करेंगे. तो I15 दैट विल बी सिंपल I14 और इसके साथ मज़ीद हमने 8 टर्म्स को शामिल करना है, बिकॉज इन 16 टर्म्स देयर विल बी इन n equal to 16 देयर विल बी 16 टर्म्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा 8 तो ऑलरेडी इधर मौजूद है और 8 आपके पास मज़ीद आ जाएंगे. अगर थोड़ा सा हम ज्योमेट्री को देख लें तो ज्योमेट्री में यह है कि अगर आपके पास सपोज करिए इसका इंटरवल है, ओके लेट्स डू दैट हियर. This is A, this is B. Okay, let's suppose this is A, this one is B. तो पहले स्टेप में तो हम सिर्फ इन दोनों को यूज़ करें बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ओनली वन इंटरवल. फिर इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसमें एक पॉइंट इंक्लूड करते हैं विच इज़ A plus h dash डिवाइड बाई 2, जो कि इसका मिड पॉइंट बन जाएगा. ओके, सो वी आर हैविंग नाउ h dash by 2, सो वी आर हैविंग 2 इंटरवल्स, वन इज़ दिस वन. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम मज़ीद एक एक इंटरवल को इंक्लूड करते हैं जो कि यहाँ पे इसके मिडल में लाई करेगा. एक यहाँ पे हम लेंगे, ओके, वन विल बी हियर एंड द अदर वन विल बी हियर. तो आप देख सकते हैं पर जो इंटरवल्स हैं वो 4 बन गए. फिर मज़ीद इनके बीच में हम एक एक इंटरवल को लेंगे. ओके, एक आप यहाँ पे लेंगे, दूसरा आप यहाँ पे लेंगे, तीसरा आपने यहाँ पे लेना है, फिर आपने इसको यहाँ पे लेना है और अगेन एंड सो ऑन, ये इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे. Okay, so we have so on and then we do what, we have to go for Romberg setup. जो Romberg के बेसिकली स्टेप्स हैं वो इन ही वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं. ये जो वैल्यूज़ हैं I11, I12, I13, I14, ये असल में रिपीटेड ट्रेपेजॉइडल है
ओके, कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल भी इसको कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अब ये जो वैल्यूज़ हैं I11, I12, I13, I14, इनको फर्दर प्रोसेस करते हैं, उनकी लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं और वहाँ से हम रिजल्ट्स को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। सो हाउ डू वी डू दैट? ओके, सो द रोमबर्ग मेथड स्टेप्स आर गिवन एज, in the first step we do what, we construct a table जिसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमारे पास वही वैल्यूज़ आते हैं जो हमने ट्रेपेजॉइडल से फाइंड किए होते हैं, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों की कम्बिनेशन लेते हैं और वो से जो वैल्यू आती है वो एक सर्टन फार्मूला है उसको हम करेंगे, तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं और इससे हमारे पास ये T2 आ जाता है, एंड दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला T22 दैट इज इक्वल टू T12 प्लस 1/3 टाइम्स T12 माइनस T11, ओके, एंड सो ऑन. Okay, the next one is combining T12 and T13 and storing that value into T23. So we have T23 that is T13 plus 1/3 T13 minus T12, and then you find T24 as well. The formula is T24 equals T14, and then we have T13. Okay, and you see the next one is using T22 and T23 to get T33. Okay, the formula is this one, T33 that is equal to T23 plus 1/15 to T23 minus T22, whereas the next one will be giving you by using T23 and T24 to get T34, that will be given in this way, और फिर इन दोनों को combine करेंगे T33 और T34 को combine करेंगे to get T244 by using this formula. You see, T44 that is equal to T34 plus 1/3 T34 minus T33. Okay, अगर आप इन सबको एक ही फार्मूले में लिखना चाहते हैं, for that purpose we are having this formula Tj plus 1 k plus 1 that is equal to Tjk plus 1 plus 1/3 Tjk plus 1 minus Tjk. Sorry, it's some wrong. It's 1/4. Yeah, there is something wrong here. Okay, this is 4 power j minus 1. This formula is 4 power j. This formula is this is a bit mistake. This is 4 power j minus 1. So this is not basically 1/3. This is 1/63. Okay, because in this case, say j will be 3. The 4 power 3 that is 64, and then we have minus 1. So general rule is what, that is 1/4 power j minus 1 into Tjk plus 1. You see, if you put j equal to 1, k equal to 1, we have T22, that will be T12, 1 divided by 4 power 1 minus 1 is 3. So in this case we are having 1/3, and then we have T12 and T11. अगर हम इसमें पुट करें j को 2 पुट करते हैं तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर 4 पावर j, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं. ओके, एंड सो ऑन. ओके, लेट्स मूव फर्दर to explain the same concept with the example. So we are taking an integral from 1 to 2.6 with 1/x and be taking n equal to 8. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम फाइंड कर देते हैं h को, जो कि टेबल की कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी होता है. अगर हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक हम वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लेंगे, तो बार बार फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. अगर आप टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहते तो उसके लिए फिर आपको h भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन सारे फार्मूलाज में हम यूज़ जो कर रहे हैं वो h डैश को यूज़ कर रहे हैं. तो h डैश इज़ बेसिकली b माइनस a विच इज़ 2.6 माइनस 1, और दिस इज़ इक्वल टू 1/1.6. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. अगर करना चाहते तो भी ठीक है, अगर ना करना चाहें तब भी ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं शायद यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज मैं डायरेक्ट को फार्मूला करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो उसमें मुझे वो टेबल से वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू यूज़ दोज वैल्यूज फ्रॉम टेबल. यू सी दैट फॉर x इक्वल टू 1 रेसिप्रोकल इज़ 1/1. समटाइम्स ये चीज़ अगर नोन ना हो फंक्शन तो फिर तो ऑब्वियसली आपको टेबल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर फंक्शन नोन है तो फिर आपको टेबल की ज़रूरत वहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ती, क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग हियर यू विल सी इसको हम कैसे कर रहे हैं. सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट डू वी डू, विल बी बेसिकली finding I11. So what would I do, I'll be using calculator. So इसको मैं a कहूँगा, I'll be just labeling that as a. Okay, so my I11 is a. So this will be computed as 0.5, 1/2 0.5,
and f naught is my first value of function, so I'll simply write 1 over x, because I might be changing the value later on as well. So yeah, it's 1 over x, and because the function is 1 over x, and plus I'm interested in fn as well. So in this case fn will be what? That will be simply 1 over x plus m, if m is my h dash, right? So that's basically f naught, and then it is what? It is 1 over x plus m, which will be this one, the last one, 2.6. Okay, so it can be done in this way, and then we will simply multiply this t1 to find t1 1. I'll be calling it again h is a is equal to, that is m times a again. I'll do that later on there. See, अगर मैं यहाँ पे करूँगा इसको, so what would I do? I would simply write that my a is now updated with multiplied by m a. So I simply take m multiplied by a, so I'll get this value there. See, then for the second one, for I12, I'll call this I12 as my b. Okay, keep in mind I will do this later on, because at the beginning if I do that there will be issue. Okay, so my b will be what? That is in fact उसमें a ऐड हो रहा है, अगर आप देखें तो इसमें दोबारा ये ऐड होगा, so b is equal to a plus, right, and then we are having one value here, f of a plus h dash by 2, from which you can take value from table directly, or you can simply say 1 divided by, because the function is what? That is 1 over x, so just take reciprocal of this, so it is 1 divided by a, which is x, my initial value, plus m divided by 2, right, and then I'll be later on finding that b is equal to m times b. Then I'll find the next step, which will be I3. I'll label that as my c, which will be again b plus, including these two values. Okay, and then I'll go for I14, which will be again c plus, including these values, which are x plus m by 8, 3m by 8, and then x plus 4m by 8, 5m by 8, and then 7m by 8. Okay, so I'll be doing these things in calculator, and I'll get these values a, b, c, d, okay, which I'll use in the next.
goes up to maybe many, if the space is not issue, so yeah, you can go to any number, और फिर आप ये सारे के सारे एक साथ में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इशू है तो इसमें आप वो नहीं कर सकते. सो व्हाट वुड आई डू हियर, सी प्लस, बाकी वही चीज़ हम करेंगे. दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाय, इट्स 1 डिवाइडेड बाय अगेन x. Okay, my x is here, so x plus, then I go to h dash by 8, so h dash is my m, so again I'll take m divided by 8 now. Okay, and then I'll take plus one more term, again it is 1, नीचे हमारे पास आ जाएगा x plus 3 x, and then plus, then we have again 3m by 8, so I'll simply take 3, then I'll take m, then I'll take 8, so this one, then we'll be taking 5 by 8, so plus again, okay, it is plus, it is 1 divided by again x, and I'll take plus, and then we have 5m by 8 now, so it's 5 h dash divided by 8. I'm left with only last one. So next is plus, then we have 1. Okay, again you will go for this quantity, which is 1 divided by x plus, now again it is that is 1 divided by a 7 times m divided by 8 divided by 8. Okay, and then we may compute those values again now, because I'm interested in what I'll find a that is equal to m times a equals m times a equals m times a, b equals m times b, b, this is equal to m. अगेन हमने ये देखना है कि ये कहाँ तक कर रहा है, क्योंकि उसके स्पेस का मसला होता है. So b is equal to m times b, then c equals m times c. Let's hope for the best so that I could complete that. C equals, okay, it again not done, but don't worry, it's okay, because if it is not there, doesn't matter, I can just get rid of this, and I'll just go for a calc now. Already I may be c there. Okay, I'll just put this value. So I have x as well, x is 1, you know that, and my m was 1.6, my a was 0.6923, okay, my b was there, my d is now 4.7925, so there's a difference in decimal points, that's okay. And then I'll simply equate equal, so I'm getting a value that is 1.108 something or 1076. Then I just press equal to get b, so my b is what I already obtained, that 1.99, right, b is what is my 1.99, yeah, something is wrong. Okay, yeah, this will be divided by 2 as well, because we are doing h dash by 2. Okay, should have done that. Okay, so we may divide this one by 2. MA is okay.
and we have this one. Okay, this is done. Okay, it is gone. So let me calculate this one, then I may go for the other thing. So let's do that calc. So C is okay now. Yeah, this is my C, so it is 2.41767 something equal. X is 1, M is my 1.6. Now D is my 4.79. Yeah, 17. Okay, so that's what we are interested in. Now I'll be finding what? I'll be finding my A, B and C. So let's do that again. Yeah, it's a bit yeah, obviously A equals M times B, M times A. लेकिन यू मस्ट बी केयरफुल, ऐसा ना हो कि हमारे पास ये ए की वैल्यू इसने स्टोर की हो तो फिर थोड़ा सा हमें गलत वैल्यू देगा भी. सो देन वी हैव बी, बी इक्वल्स दैट इज m by 2 times b. Okay, because we are dividing that by h dash by 2, so yeah, I just forgot last time to multiply that with dividing by 2. So it is again, so you can go for m multiplied by b, and then we have divided by 2. Okay, the next one is C. So C equals again m times C, then we have divided by 4. Okay, and then we have D, D that is equal to m times D divided by 8. Okay, so just now again calc, so it is 1.6, that's okay. Then we press equal, so it give you A, which is 1.10, that's okay, we got this value. Then we have 1.9966, B is something like that, 1. Yeah, it was changed a bit earlier, so yeah. Then we have C, then we have D, and then we have A is equal to, you see that the value is changing now because the previous values were there. Okay, so I may give this value back to it. You see, for example, if I do this one, so okay, let's do this again. Yeah, it's a M is 1.6, that's okay. I'll just give it A back, so that is 1. I made a mistake, so you don't need to put this value again. Once you have done by using what I explained, जो मैंने अभी explain कर दिया, अगर आपने वैसे कर दिया तो आप दोबारा देने की ज़रूरत उसको नहीं है. B मैं दे रहा हूँ इसको 1.2485. Okay, let me do that again. M is okay, so I go for A. I'll give this one A is 0.6925. 6925, and I'll press B is my 1.2485. 0.2485. ज़िम्रा कि इसको आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी जब यहाँ से कंप्यूट होता है तो उधर सेव हो जाता है, लेकिन बेसिकली मैंने बीच में कुछ गलती की थी जिसकी वजह से ये सारा हमारे पास मुझे दोबारा करना पड़ा. सो प्रेस इक्वल,
C is my 2.4175, 2.4175, and my D is what? This is my D to 4.7925, 4.7925. I just press equal. So you see that my A will be what? It will be exactly 1.1080. Then I press equal, I'll get B, which will be simply 0.9988. I just pressed equal to get the next value of C, which is 0.9670. I just press equal to get the next value of 0.9585. Okay, now is doing the same steps. We go for the next step, which is here. You see, as I explained earlier, I'm going to use formulas for this one. So the next formula is what? That is, I'll call this simply A. The next step, that's a third step. So we need to introduce another formula for this as well, but you don't need to give the values again and again. The values are already there. So I'll just simply take A equals, that is, as I said earlier, it will be my 4B, 4 times B minus A, 4 times B minus A divided by 3. अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया था. And then I will do the next one as well. That is B equals that will be 4 times C minus B, 4 C minus B divided by 3. Okay, and then we have next one, which will be C. So C is what? That is equal to, again fraction, it is 4 times D, D minus C divided by 3. Okay, so just again calc, you don't need to give this one because we are having B already 0.9988, so it's okay. And this is 1.1080, next is 0.9670, this value. Then we have next value is 0.9585, and it will just calculate all these values for you. You see, this is now 0.9624. Again press equal, you get the next value, which is 0.9564, and then you press again equal to get the next value, which is 0.955666, and so it's simply 7. Okay, now to go to the next step. The next step is what? We need to change the formula again. All the formulas will be changed little bit. Okay, so the first one is what? It is now, it was obviously 4 times B, but it is now 16 times B. So I may simply multiply that by 4. Okay, it's simple, take 4 and then we take multiplication. And in the denominator we are having 15, sorry. So the denominator will multiply by 5 simply. It's up to you, whatever method you want to use. And do same thing with everyone. Multiply numerator with 4 times 4, okay, and denominator multiply that by 5. So you can simply write 5 and then multiply by 8, and do everything with all the formulas. Because we are having 16 in the numerator, as I explained earlier, and 15 in the denominator, so you can simply get that. इसमें कोई ऐसे रूल नहीं है कि हम क्यों 4 और 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई डोंट नीड टू चेंज द फार्मूला. मैं वहीं से कर रहा हूँ. एंड अगेन आई जस्ट प्रेस कैल्क. इट विल बी टेक वैल्यू 0.9564 नाउ, दिस वन एंड दिस वन. So I just press equal. It is 0.9624, and my C is 0.9557, my D is 0.9585. When I press equal, I'll get the next difference, which is
0.9560, you see, and the next one will be simply pressing equal 5.9556, right? And if I do the next step, I'll just replace this one with what? See, this formula is, अगर हम ये फार्मूला चेक करेंगे तो इसके जो फार्मूला था वो 64/63 था, तो आई विल टेक अनदर 4 हेयर, और नीचे आपके पास जो है वो 63 है, तो ये ख़त्म करके इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे सिंपल 6 लिखते हैं, 63 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 63 से डिवाइड हो रहा है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें, सॉरी, न्यूमरेटर में 64 है तो हम एक और 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास, उसमें 63 आ रहा है। आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, 4 पावर j-1 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 63 आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अगेन द सेम थिंग, बिकॉज में 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सिंपली नीचे हम 63 लगा लेते हैं। तो आपको अब यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फार्मूले में थोड़ा सा अपनी मॉडिफिकेशन करनी होती है, जो कि मेरे ख्याल में इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो इसी तरह जब हमने b देना है तो हमने b ये वैल्यू अब देनी, ये b हो जाएगा हमारे पास, ये a हो जाएगा, तो a विल बी 0.9560। हमें c और d की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे हम कंप्यूट करेंगे तो हमें देता है 0.9556, एंड वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस वन, बाकी हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इसी दैट ये 0.9556, ये 0.9556, ये दोनों वैल्यू रिपीट हो गए। इसका मतलब यह है कि या द रिजल्ट इज़ करेक्ट अप टू 4 decimal places. Okay, let me talk about the MATLAB code quickly. It's very easy because इसमें हम क्या करते हैं, इसमें basically हम वही जो trapezoidal है उसको हम use कर रहे हैं। Okay, तो you need to define a function for it as well, which is already explained. हमने इसको f देना है, उसका हमने lower limit देना है, उसका हमने upper limit देना है, और उसका हमने के देना है, कितना इटरेशन हमने करनी है, हमने 4 तक जाना है, हमने 5 तक जाना है, हमने 6 तक जाना है, इट डिपेंड्स अपॉन इट। सो पहले हम ज़ीरोज़ ले लेते हैं ताकि वो मैट्रिक्स बन जाए, और यहाँ से फिर हम p की वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन p की वैल्यू कहाँ से, ये ट्रेपेज़ॉइडल वाला कोड जो हमने ऑलरेडी किया था। इफ़ आई ओपन दैट कोड, सो ट्रेपेज़ॉइडल कोड वाज डन हियर, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको कॉल करेगा, दिस इज़ द कोड ट्रेपेज़ॉइडल वन, लेकिन वो डिफरेंट n के साथ करेगा। जब उसको हम यहाँ पे k के वैल्यू देगा ना, जब k 1 लेगा तो वो एक इंटरवल लेगा, और जब यहाँ पर हम इसको k 2 देगा तो 2 इंटरवल लेगा, ये एंड सो ऑन। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से करेगा। ओके, तो ट्रेपेज़ॉइडल से हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे, और फिर इसके बाद क्या आता है, ये जो फार्मूलाज हमारे पास आ रहा है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वही चीज़ जे, और जो आप देख सकते हैं p j plus n k that is equal to 4 power k minus 1 steric, this one minus this one divided by 4 power k minus 1। अभी जो हमने फार्मूले को यूज़ किया था तो यही वो फार्मूला है, एंड when do that it will give you simply n is equal to n plus 1, और स्टेप चलता जाएगा। ओके, सो लेट्स डिफाइन दिस। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें हमें फंक्शन को डिफाइन करना है। So f could be defined as 1/x because